Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about Indus Water Treaty. Now, I hope you all are aware that Indus Water Treaty has been very much in the news in the last, I would say, 1 year. It remains in the news if you read the Hindu editorials or any newspaper, whether Indian Express also. I'm sure you must have come across Indus Water Treaty. So in today's class, we will be discussing about Indus Water Treaty. We will be discussing why it is in the news. We will discuss questions related with Indus River, which were asked in the previous year questions, previous year exams. Okay. So we'll discuss things around it also. Okay. So am I audible, visible? Is everything fine? So if yes, then please write yes in the comments so that we can start, we can move on with the session. Shall we begin? Is everything fine? Okay. So let us begin with the first question of the day. So this is the question. This is a previous year question. I think it was asked in MHCT as far as I could remember. Please read the question and then answer me. This is a river which starts near Lake Mansarovar in Tibet, goes to India and then to Pakistan, where it falls near Karachi port in Arabian Sea. Which river is being talked about? Indus River, Jhelum River, Satluj River or Ravi River? What is the right answer? क्या सही जवाब है बताइए? And I think you all should be answering it. I'm expecting everyone to answer because yes, Safi Nomani and Agastya Iyer, you both are right. The right answer is option A. Indus River is the right answer to this question. ठीक है? तो अगर आप देखोगे, yes. So this is the river. It starts somewhere here, goes to Ladakh Union Territory, goes to Pakistan, and it falls in Arabian Sea here. ठीक है? So this is somewhere here you will find Lake Mansarovar. So it is near Lake Mansarovar that it starts. Kailash mountain है ना, Kailash mountain यहीं पर है, Kailash mountain है ना. So there is actually Kailash Mansarovar Yatra also. I'm sure you must have heard this term, है ना. Then actually it falls in near Karachi port, है ना. So here is Karachi port, and this water body which we are is referring is Arabian Sea. Arabian Sea. Okay. So this blue river is actually nothing but Indus River, है ना. So let's move on to the next question. The next question is with reference to the Indus River system. 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct? The right answer, the options are Chenab, Jhelum, Ravi, Satluj. I know it's a difficult question. This was asked in a very prominent government exam. Okay, थोड़ा सा difficult question, I can understand. But still, if you can tell me, when I'm saying Indus River system, I am not only referring to Indus, but I am referring to all other tributaries. सब मिला के, सारी tributaries Indus River मिला के बात हो रही है. So that is what we call it as Indus River system. या Indus River Basin भी लिखते हैं word. Indus River Basin or catchment area, these terms are used. So let me see how many of you can answer. Agastya, have you answered D of this question or the previous question? Achha, D aapne bataya. Someone has said, Safi said B and Agastya said D. Yes, Agastya, here you are right. Actually, the right answer is D. Satluj is the right answer to this question. Okay. And this was asked in a very prominent standard government exam, and I know it's a difficult question. पूछा इधर है कि 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. तो कौन सी river directly Indus से मिलती है? So first of all, let me tell you what actually is the case. अगर आप यहाँ देखोगे, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, actually it is something like this. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि Indus ऐसे चली. This is Indus. Now इसके ऊपर जो होता है, झेलम starts, I'm writing J. इसके नीचे आती है चेनाब, ठीक है. Then we have Ravi, Byas. Ravi comes like this. Then Byas is something like this. सतलज यहाँ से आती है और it meets, और ये सब मिल जाती है और सतलज जाके अकेले मिलती है जाकर के, है ना. But it is not called as सतलज. It is here called as पंजनाद, ठीक है. तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, अगर आप गौर से देखोगे, ये सबसे ऊपर वाली इंडस है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ठीक है. इसके बाद वाली रावी है, ठीक है. So this is J, झेलम, चेनाब, रावी. This one is ब्यास, और ये नीचे जो जा रही है सतलज जा रही है. तो अगर आप देखोगे सबसे लास्ट रिवर जो इंडस से मिल रही है वो है
Satluj, and here actually the Satluj is called as Panjnad. Okay, and all the rivers Jhelum, Chenab, Ravi, Beas has already actually met with Satluj, and finally Satluj go and meets Indus. ठीक है, तो the last river है which meets Indus is Satluj. तो ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये है, and among the following which one is such river that joins the Indus direct, last में जाकर के जो मिल रही. So it is actually the question, the answer is Satluj. D is the right answer to this question. I know it was a very tough standard difficult question, but yes, if this has been asked in government exam, there are chances that it gets repeated. जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एंड दीज आर रिपीटेड बाय ALET, ठीक है, और बाय अदर एग्जाम्स. मैंने ऐसा देखा है कई बार, जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट क्वेश्चंस आते हैं उसको कॉपी भी कर लेते हैं डायरेक्टली. दैट इज व्हाई आई डिस्कस क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपकी चर्निंग हो और आप याद से रख सकते हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया. So before meeting the Indus, the Satluj is actually called as Panjnad, and this is the river which means directly, है ना. Panjnad means 5 rivers, ठीक है. So 5 river, पंच मतलब 5, है ना. So it has already water of Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. ठीक है, ये सब का 5 का river है ना, तो का पानी इसमें होता है. That's why Panj means 5. I hope you are aware. So this is what we call it as Panjnad. Is it clear? I think it's clear, simple. Let's move on to the next one. What is the length of Indus River? Why I'm asking it? Because in 2021, they asked a question in CLAT. And the question was, what is the length of LAC? LAC का length पूछा गया था exam में. And what is the length of LAC? Can anyone tell me? So similarly, since Indus Water अक्सर news में रहता है, always remains in the news, Indus Water Treaty. Maybe they can ask about Indus River as well. हाँ, LAC की लेंथ है 3488 किलोमीटर. वेरी गुड, अगस्त ईयर. एंड लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज, यस Safi Nomani, you are also right, 3488 kilometers is the length of LAC. What is the length of Indus River? 2988, 3180, 3976, 4127. Yes, Safi Nomani, Augusta year, you both right. 3180 kilometer is the length of Indus River. आप देख सकते हो, it is actually mentioned in Wikipedia also, है ना. And yes, it starts from Mount Kailash, या कैलाश मानसरोवर जो होता है वहां पे, वहीं से, एंड इट टेक्स बेंड्स शार्पली अराउंड नंगा पर्वत एंड फ्लोज साउथ बाय साउथ वेस्ट थ्रू पाकिस्तान बिफोर एम्प्टिंग इनटू अरेबियन सी नियर कराची पोर्ट. तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो बता रहे हैं कि नंगा पर्वत के आसपास टर्न करती है, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये कराची पोर्ट हो गया, अरेबियन सी हो गया, और समवेयर हियर इज नंगा पर्वत जहां पर वो टर्न करती है. ठीक है, so Nanga Parbat is actually the westernmost coast of Himalaya, westernmost portion of Himalaya. So it actually takes a turn, a sort of a U-turn, not exactly U-turn, but turn ही एक तरह का ना. So that is what you should be knowing, है ना. तो इससे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखो उठा के विकिपीडिया से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं. यही है ना क्वेश्चन कि it falls into the Arabian Sea near port city of Karachi. So that is what you should be aware कि these types of questions are asked. Let's move on, है ना. और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है? जस्कर, है ना, इज द पंजाब. फिर सारे जितने भी है ना पंजनाद रिवर्स जो आगे झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, सारे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब है जैसे कि रिवर स्टार्ट हो रही है, इट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, ये कराची है ना, तो मतलब इसके डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसके लेफ्ट से आके मिल रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी. तो जैसे यहाँ पर जस्कर, आई थिंक यहाँ पर मिलती है कहीं पर जस्कर, फिर जाता भी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब आकर के तो मिल रही है ना, तो लेफ्ट ही साइड में मिल रही है, इसके डायरेक्शन से तो लेफ्ट में मिल रही है, व्हिच वी कॉल इट एज पंजनाद. ठीक है, और जस्कर यहाँ पे पड़ेगा, जस्कर, दैट्स आल्सो लेफ्ट बैंक. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है? शयोक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल. ठीक है, तो ये सब इधर पड़ेगा ऊपर. ठीक, इधर से यहाँ पे कहीं पे शयोक मिलेगा आपको, काबुल यहाँ पे कहीं पे, काबुल रिवर है, अफगानिस्तान से आती है. ठीक है, यहाँ काबुल है, हाँ, काबुल सिटी भी है, काबुल रिवर भी है. ठीक है, देन देयर आर अदर, ठीक है ना, शोयोग, गिलगिट हो गया, गिलगिट भी यहीं पर है, गिलगिट रिवर. ठीक है, तो सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. तो डायरेक्शन से काउंट करते हैं राइट और लेफ्ट, जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर से अगर राइट से आ रही है तो दैट्स एक्चुअली, है ना. सो दीस आर द फेमस रिवर, कुर्रम एंड गोमल आल्सो. सो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट इंडस रिवर दैट यू शुड बी नोइंग. और वो जनरली ज्योग्राफी के एग्जाम, मतलब जनरली ज्योग्राफी सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, है ना, इंडस रिवर से रिलेटेड. एंड एक्चुअली और आपको पता होगा इंडस रिवर इज एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना. एंड इन ऋग्वेदा द टर्म सप्त सिंधु इज मेंशन्ड, और सिंधु रिवर, सिंधु मींस इंडस,
actually in Avesta religious text Hapta Hindu is mentioned or 7 rivers. Avesta कौन सी religion की literature है? Can you please tell me? Avesta is a religious book of which religion? जैसे एक ऋग्वेदा है, सो ऋग्वेदा इज एक्चुअली फ्रॉम सनातन धर्म है ना, हिंदू ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद है ना, सो इन हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर, सो दीज आर एक्चुअली हिंदू रिलीजियस बुक्स. अवेस्ता जो है इट्स अ रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन? पूरा आई थिंक ज़ेंद अवेस्ता लिखते हैं, कोई बता सकता है? अवेस्ता इज अ रिलीजियस टेक्स्ट और इज अ रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन? बुद्धिस्ट? नो, नॉट बुद्धिस्ट. Zoroastrianism, very good Agastya. हाँ, yes, you're right. Actually Avesta, Zen Avesta जो ना Zoroastrianism का, Zoroastrianism, जिनको हम लोग पारसी कहते हैं जनरली है ना, लाइक रतन टाटा सर वाज देयर, सो ही वाज पारसी है ना, सो Zen Avesta is their book. Yes, अगस्त्य आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड. सो उसमें भी उनके भी रिलीजियस बुक्स में ये वर्ड मेंशन है, हप्ता हिंदू वर्ड मेंशन है ना, और सप्ता सिंधु वर्ड इज मेंशन इन ऋग्वेदा. ओके, सो दिस इज व्हाट. And since I'm talking about Indus Valley civilization, I have already conducted a class on it. ठीक है, so please go and watch it. So सबसे पहले please go and subscribe to our channel if you have not subscribed yet. Subscribe कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना. And either you can go live section में जाओगे ना, live वाले section में. So you go down, you will get a Indus Valley civilization class. और अगर नहीं मिलेगा, so just search on YouTube this link. If you are not able to find, search this on YouTube, Indus Valley civilization career launcher. When you search this, you will get this video. Watch this video. That would be very, very beneficial. These are the questions are asked in different exam from Indus Valley civilization. That is why I suggest that you should be watching. ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर देखना. So we are talking about it. एक और चीज बताते हैं. Since this river goes like this है ना, Indus River. Indus से बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया. इंडस से ही इंडिया वर्ड आया है. इंडिया, हिंदी, हिंदू, ऑल आर द वर्ड एक्चुअली केम फ्रॉम इंडिया. इंडस, यस, इंडस को एक्चुअली सिंधु कहते थे ओरिजिनली है ना, ऋग्वेद में. ठीक है. सिमिलरली देयर इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज आल्सो नेम्ड आफ्टर दिस इंडस रिवर. एंड कैन यू प्लीज टेल मी, सो दिस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान is named after this river. What is that province? मैंने इंडस वैली की क्लास से पढ़ाया है. So if you have watched this class, I'm sure you can answer it very easily. The black region जो मैंने highlight किया है, this is a province. Which province of Pakistan? Anyone? और इंडस रिवर से उसका नाम लेंगे. सिंध. Yes, Agastya here, you're right. Sindh province. Sindh province. ठीक है. जो लोग बोलते हैं कि he or she is a Sindhi, मतलब सिंधी रेस से रीजन से आते हैं. ठीक है. So even many Indians are actually Sindhi because before partition they lived in that region. ठीक है. तो सिंध वही है, वो भी इंडस से ही है, सिंधु वर्ड से ही सिंध वर्ड आया है. ठीक है. So that is what you should be doing. नहीं, रावी रिवर इधर है. रावी तो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई यहाँ पर, जैसे लाहौर से गुजरती है रावी रिवर. ठीक है, दिस इज रावी, फिर जाके मिल जाती है बाद में. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर. सो दीस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इंडस. इंडस रिवर हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली बहुत सारे डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और इंडस वाटर सिविलाइजेशन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच इट. Let's move on. Let's begin with Indus Water Treaty. So Indus Water Treaty, which was a treaty for, ये क्या चीज के लिए treaty था? Indus Water System पूरा. So when I'm saying Indus Water System, I'm talking about Indus River Basin पूरा. Or what I call, yes. So it was actually signed between India and Pakistan in the year 1960. Yes, Agastya Iyer and Safi Nomani, you both are right. B is the right answer. तो मैं बता देता हूं, जब मैं इंडस वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूं तो देखो, जैसे ये सारे रिवर है, दीज आर ऑल द रिवर्स है ना. तो इस पूरे रिवर को, इस पूरे रीजन को कहते हैं बेसिन, इंडस रिवर बेसिन कहेंगे. सो वी कॉल इट एज इंडस रिवर बेसिन, और व्हाट वी कॉल इट एज कैचमेंट एरिया. ये भी वर्ड लिखते हैं कि इंडस रिवर का कैचमेंट एरिया है ये.
ठीक है, इंडस रिवर बेसिन कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो इस पूरे का, यानी जब ये अग्रीमेंट हुआ तो सिर्फ इंडस रिवर के लिए नहीं हुआ था, बट इंडस प्लस द अदर 5 रिवर्स, सो पंजनाथ रिवर जो है, सो 5 + 1 ऑल द 6 रिवर्स का है ना हुआ था ट्रीटी। So this treaty, Indus Water Treaty, which was signed in 1960, was signed between the two leaders. And what are the name of the two leaders? बताइए। Yes, Agastya Iyer and Safi Namani, you both right. The right answer is D. Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India and Ayub Khan was the Field Marshal Army Officer of Pakistan. So Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India from 1946 से भी कह सकते हो, बट आजादी की बात से करें तो 1947 to 64। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री तो बाद में बने थे ना, आफ्टर हिज डेथ 64 से लगभग जनवरी 66 तक समझ लो, है ना। So the right answer is D is the right answer. Jawaharlal Nehru and Ayub Khan. So D is the right answer. ठीक है। Indus Water Treaty is a water distribution treaty between India and Pakistan, and signed in 1960 between Jawaharlal Nehru and then Pakistan's President Field Marshal Ayub Khan. The next is Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan and mediated या brokered by, इस तरह वर्ड लिखते हैं, brokered by या mediated by World Bank, UN Security Council, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब किसकी हेल्प से, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेल्प से ये ट्रीटी करवाई गई थी। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू आंसर यस। अगस्त्य अय्यर एंड सैफी नमानी, यू बोथ राइट। वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तो अगर यहाँ पर इनफैक्ट लिखा हुआ भी था, है ना, नेगोशिएटेड, अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, है ना। सो दिस इज फॉर इंडस वाटर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द 5 ट्रिब्यूटरीज, सो 5 + 1 टोटल 6 रिवर के लिए, है ना। इट वाज साइंड इन कराची, बिकॉज कराची मैंने अभी बताया, दिस इज द सिटी ऑन विच इंडस रिवर इज देयर, तो इसीलिए खास करके वो शहर चूज किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी, देखो फर्दर पहले आई हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट हियर यू विल फाइंड, हियर इज कराची, है ना, व्हिच इज ऑन द इंडस रिवर। सो टू सिग्निफाई इट फर्दर कि दैट सिटी वाज चूजन वेयर एक्चुअली यू विल फाइंड इंडस रिवर। So let's move on. तो हम लोग कुछ चीजें, I have taken a lot of things from the World Bank also. तो ये मैं उनकी वेबसाइट पे देख रहा था, फैक्ट शीट इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पर, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, and this I have taken from their official website. So it was signed in 1960 after 9 years of negotiation. यानी 1951 से लेकर 1960 तक negotiation बातचीत हुआ होगा between India and Pakistan with the help of World Bank, which is also a signatory. मतलब World Bank is also a signatory of this Indus Water Treaty. So the negotiations were the initiative of former World Bank President Eugen Black. उस टाइम पर, at that time, the World Bank President Eugen Black had the role of ensuring that this treaty should be done. And at that time, the US President was Eisenhower. ठीक है. So this treaty has provided, has survived frequent tensions, including conflict, and has provided a framework for irrigation, hydroelectric power project, etc. मतलब एक रास्ता बताया कि कैसे it has given a way that how the two countries should be doing irrigation and having an hydroelectric power project without any dispute. ठीक है. So that is what this website says. ठीक है. तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अच्छा एक दो चीज मैं पूछना चाहता हूँ. Who is the current president of World Bank? So at that time the president was Eugen Black, but who is the current president of World Bank? And if you tell me who is the current CFO, Chief Financial Officer of World Bank, I'll be very happy, because these people are Indian. And when actually an Indian is at an important position at international level, it automatically becomes very important for you. कोई भी इंडियन अगर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको याद होना चाहिए. Yes, Agastya, Safi, you both are right. Mr. Ajay Banga is the president of World Bank, and who is the CFO? Anshula Kant. Very good, Agastya here. And there is one more Indian chief economist. ठीक है. So Ajay Banga, Indian origin person. Then Anshula Kant, managing that MD and CFO. ठीक है. Then Indermeet Gill is a chief economist. He is also an Indian origin person. इतने सारे Indian origin के लोग हैं in the World Bank. आप समझ रहे हो, 4 important में से 3 पोस्ट जो है out of these 3 है ना, is actually belongs to the Indian origin people. So which is of course a great thing. And I hope you are aware World Bank is headquartered in Washington DC. Both World Bank and IMF is headquartered in Washington DC. ठीक है. So ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए. Okay.
it is actually a result of Bretton Woods conference. ये भी आपको पता होना चाहिए. That is what you should be knowing. The next is under Indus Water Treaty, India would get the water of 3 rivers, 5 rivers, 2 rivers or 1 river only. जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, वो बाय एंड लार्ज कैसे इसको डिवाइड किया गया था कि कितना रिवर इंडिया को मिले, कितना पाकिस्तान को मिले. सो इंडस वाटर ट्रीटी मींस इंडस प्लस 5 पंजनाद रिवर्स. 5 पंजनाद में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. तो 6 रिवर में डिस्ट्रीब्यूशन करना है. कैसे करना है डिस्ट्रीब्यूशन? What was the recommendation of Indus Water Treaty and how it was supposed to be? Now, Safi Nomani, now you are right. Not C, A. The right answer is A, 3 rivers. So, कैसे सोचो? 5 plus 1, 6 rivers are there. 6 rivers are there, so 6 by 2 is 3. ठीक है, so 3 इंडिया को मिला, 3 पाकिस्तान को मिला. ठीक है. And can you please tell me the name of the rivers which India got and the name of the rivers which Pakistan got? I'll be very happy if you tell me. अच्छा, एक चीज जस्ट आई रिमेम्बर्ड, सो लेट मी टेल यू. इसके अलावा फर्स्ट फॉर ऑन Saturday at 8:30 PM we'll be having a budget session. So please do join me. ठीक है, अभी हमको याद आ गया, so I just remember it, so I've just told you because Saturday is 1st February and on that day budget will be presented. So on our YouTube channel we'll be having a class at 8:30 in the evening discussing about budget. 3 rivers are Ravi, Beas and Satluj. Very good. So Ravi, Beas and Satluj India got, and Indus, Jhelum and Chenab Pakistan got. Okay. इसको डिफाइन करते हैं वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब एंड ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज. तो समथिंग लाइक दैट. जैसे मैं आपको साफ से बना देता हूं. दिस इज इंडस, आई इज इंडस, फिर ये झेलम, ये चेनाब. ठीक है, और इसके नीचे मैं रेड से बना देता हूं. इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, है ना. रावी, ब्यास, सतलज. ओके, तो जो टॉप की 3 रिवर्स थी इंडस, झेलम, चेनाब, दिस गॉट टू पाकिस्तान एंड रावी, ब्यास, सतलज गॉट टू इंडिया. ठीक है. सो अब इसमें प्रॉब्लम, एक चीज थोड़ा सा इशू था कि देखो ऊपर की जो 3 रिवर है उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट है, स्पेशली इंडस में. सो इंडस, झेलम, चेनाब गो टू पाकिस्तान, रावी, ब्यास, सतलज विल गो टू इंडिया. प्लस एक और चीज कहा गया था कि इंडस का ना 20% वाटर इंडिया कैन यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, ये भी कहा गया था. ठीक है, दिस इज अ रफ कॉन्सेप्ट. इंडिया कैन यूज फॉर इरिगेशन पर्पस, दैट्स द बेसिक आइडिया. उसमें कुछ एक्सेप्शंस है ना, कि कहां पर देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कैन बी सेट अप एंड दैट इज मेंशन इन एनेक्स्चर एंड ऑल. तो उतना डिटेल नहीं जाना है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, इफ यू कैन सी. सो टॉप 3 रिवर विल गो टू पाकिस्तान. इंडस, ये वाला झेलम है, ये वाले है ना, झेलम, चेनाब विल गो टू पाकिस्तान एंड रावी, ब्यास, सतलज. सो ये 3 रिवर इंडिया के लिए, मतलब इंडिया कैन यूज द वाटर, और ये तीनों पाकिस्तान के यूज टेक्निकली. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन यू रीड in detail you will get to know that this is the first time one of the most successful treaty between the two countries. ठीक है, तो 1947-48 में वाटर की लड़ाई हुई थी, बट 1960 के बाद we have not seen conflict between India and Pakistan on the issue of water, although we have seen the conflict on different reasons. Just the 1965 war, we have seen 1971 war, 1999 Kargil war, etc. But we have not seen conflict on water reason. ठीक है, तो इसीलिए इसको जनरली कहा जाता है कि one of the most successful water sharing treaty. So that is what you should be doing. अब देखो, let us discuss something about this. अब देखो, अब क्यों न्यूज में. ठीक है, सो कुछ डिस्प्यूट्स है, सो we will discuss about that. देखो, अगर the treaty also establishes permanent Indus Commission which has commissioners from each country. ठीक है, यानी कि दोनों कंट्री से, इंडिया और पाकिस्तान से कमिश्नर्स यानी ऑफिसर्स भेजे जाएंगे, एंड देयर विल बी अ परमानेंट इंडस कमीशन विल बी सेट अप वेयर ऑफिसर्स, द कमिश्नर्स ऑफ बोथ द कंट्री विल कम टुगेदर एंड मीट एंड डिस्कस. ठीक है, ताकि कोई डिस्प्यूट्स नहीं हो, उसके लिए फ्यूचर में भी ये प्रोविजन दिया गया था. एंड यू कैन सी व्हेन यू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वेबसाइट, आई जस्ट चेक्ड इट टुडे, एंड देखो इंडस विंग है उनका, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवेनेशन. इनके अंडर में एक इंडस विंग है
उसमें देखो है ना विंग हेड कमिश्नर इंडस, ठीक है. So basically they have a commissioner, Indus River commissioner, and there must be a commissioner in Pakistan also, and both meets. So when both meets, both are actually the member of permanent Indus commission. ठीक है, तो दोनों दोनों साइड से ऑफिसर्स आते हैं. मतलब रेगुलरली मीटिंग होती है, बट इधर कुछ दिन से नहीं हो रहा है, बट जनरली रेगुलर मीटिंग्स हैपन every 1, 2, 3 years. ठीक है, and they talk each other if there is any disputes or something like that. ठीक है, that is what you should be knowing. अब हम लोग जब जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो देयर आर क्वेश्चंस दैट आई शुड बी आस्किंग. देयर इज वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड विद जल शक्ति. दिस इज व्हाट आल्सो आई विल बी आस्किंग. सो फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जल शक्ति मिनिस्ट्री, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? योर ऑप्शंस आर मिस्टर मानसुख मांडविया, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, मिस्टर सीआर पाटिल, मिस्टर रविशंकर प्रसाद. व्हाट इज द राइट आंसर? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? Yes, Agastya Iyer, you are right. Mr. C.R. Patil is the right answer to this question. इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत थे, बट अब राइट नाउ ही इज नॉट द जल शक्ति मिनिस्टर, सो द राइट आंसर इज सी. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन क्वेश्चंस इन द पास्ट हु इज द मिनिस्टर लाइक दैट. जैसे एक बार हेल्थ मिनिस्टर को क्वेश्चन आया था 2021 में, दैट हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम कोविड वाज वेरी मच इन द न्यूज. So they are asking questions from ministers and ministry also. Like this question was also asked in 2021. In 2019, the Ministry of Jal Shakti was formed after merging Ministry of Drinking Water and Sanitation and which ministry? कौन से दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया? Is it important to conduct? अच्छा अगस्त्य, I will conduct a class. ठीक है, अभी तो नहीं, बट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कभी मौका मिलेगा. सो आई विल थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन. ठीक है, मैं सोच आई विल सेट इट, हैव अ क्लास. ठीक है, सो द राइट आंसर इज yes, the right answer, yes, Agastya Iyer, you're right. The right answer is water resource, river development and Ganga rejuvenation. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विल शेड्यूल अ क्लास रिगार्डिंग मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स. ठीक है, अब देखो, अभी मैंने ये बताया, अगर आप गौर से देखोगे, ये अब एक डिपार्टमेंट बन गया है अंडर मिनिस्ट्री, अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री. देखो गौर से देखो, प्लीज सी केयरफुली. देखा कि नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री था पहले. ओके, सिमिलरली इसके अंडर में एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है ना. अब ये एक डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनसाइड द सेम मिनिस्ट्री. तो दोनों मिनिस्ट्री मर्ज कर दिए गया, मिनिस्ट्री को के अंडर में डाल के डिपार्टमेंट बना दिया गया, बिकॉज डिपार्टमेंट इज अंडर मिनिस्ट्री. ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. द नेक्स्ट इज व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स are in dispute between the two nations in context of Indus Water Treaty? Satluj Yamuna Link Canal, Kishan Ganga Hydroelectric Power Project. HE मतलब Hydroelectric Power Project. Hydroelectric Power Project है ना. Rattle वही same HE मतलब वही Hydroelectric Power Project. Both B and C. What is the right answer? Yes, Safi Namani, very good. The right answer is D. Both B and C. यही दोनों मेन इशू है और यही पब्लिश हो रहा था पिछले कई सालों में, कई महीनों में. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अबाउट द डिस्प्यूट्स, इंडस वाटर ट्रीटी, किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ये काफी न्यूज में था, अखबार अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने दोनों को देखा होगा. जो सतलज यमुना लिंक कैनाल का डिस्प्यूट है, दिस इज बिटवीन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. बोथ आर इंडियन स्टेट्स. ये स्टेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इंटर कंट्री डिस्प्यूट नहीं है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. लेट्स मूव ऑन. है ना, द डिसएग्रीमेंट देखो, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट से निकाला है. द डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंसर्न्स डिजाइन फीचर ऑफ किशन गंगा 330 मेगावाट एंड रैटल 850 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. है ना, द वर्ल्ड बैंक इज नॉट फाइनेंसिंग either of the two project. ठीक है, अब लेट अस आस्क द क्वेश्चन, द किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ब्यास रिवर. What is the right answer? बताओ.
Kishan Ganga river is a river. Kishan Ganga river is a tributary of Jhelum. Yes. So the right answer is B. Yes, Safi Nomani, you're right. B is the right answer. Agastya Iyer, you're also right. B is the right answer. ठीक है, to this question. तो अगर आपने देखा होगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन कश्मीर फ्रॉम किशन गंगा रिवर टू द प्लांट इन झेलम रिवर बेसिन. ठीक है. It was halted in 2011 due to a dispute with Pakistan under Indus Water Treaty, है ना. So construction began, है ना. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर ऐसे झेलम जाती है ना, और यहीं पर किशन गंगा है ना. इंडस तो ऐसे जाती है, दिस इज इंडस. यहाँ पे झेलम जा रही, इसके नीचे यहाँ पे चेनाब जा रही है ऐसे. ठीक है ना. तो किशन गंगा को नीलम रिवर भी कहते हैं. दैट इज ऑल्सो व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, द नेक्स्ट इज राइटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ब्यास रिवर. कौन से रिवर पर है? Yes, Traffic Nomani and Augusta Iyer both are right. Chenab River, C is the right answer. ठीक है. तो अगर आप देखोगे राइटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, इज ऑन चेनाब रिवर, है ना, inaugurated by Prime Minister Manmohan Singh and all, and in 2013. पाकिस्तान frequently alleged that it violates Indus Water Treaty. तो आप देख सकते हो यहाँ पर है, मैंने बताया दिस इज इंडस ऐसे कुछ जाती है, झेलम यहाँ पर ऐसे जाती है, चेनाब यहाँ से ऐसे जाती है नीचे. ठीक है. सो ये चेनाब पर है. ओके. नाउ तो इसमें यह है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से मैं आपको शो कर रहा हूं, दैट डिसएग्रीमेंट्स है ना बिटवीन ऑन द डिजाइन फीचर, द डिसएग्रीमेंट इज ऑन द डिजाइन फीचर ऑफ किशन गंगा एंड राइटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, and the plants are located in India on tributaries of Jhelum and Chenab, and these two are actually designated as western rivers to which Pakistan has unrestricted use with some exceptions. Under the treaty, India is permitted to construct hydroelectric power project on these rivers subjected to constraints including design specification as provided in annexure to the treaty. ये मैं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रल मीडिएटर एंड ऑल. तो देखो अब इसमें बता क्या रहे हैं. अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था, ये डिस्कस्ड इट, कि ये वाली इंडस है, इसके नीचे समवेयर इज झेलम, फिर उसके नीचे चेनाब है ना. And these three rivers should have rights for Pakistan's right, है ना, as far as water usage is concerned. Okay. फिर इसके नीचे आती है रावी, ब्यास एंड सतलज. ठीक है ना. तो इस तीनों पर इंडिया का राइट है. ओके. बट व्हेन इंडिया इज मेकिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन झेलम की ट्रिब्यूटरी किशन गंगा, तो ये किशन गंगा पे बना रहे, और दूसरा चेनाब पे बना रहे, राइटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट व्हिच इज ऑन चेनाब. सो बेसिकली कैन इंडिया मेक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिकॉज वाटर तो पाकिस्तान को जाता है. ओके. नाउ द इंडस वाटर ट्रीटी सेज, द वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे लिखा है कि यस द ट्रीटी डेजिग्नेट्स दैट दीस टू रिवर्स आर वेस्टर्न रिवर्स. मतलब वेस्टर्न रिवर ऊपर की तीन को मान रहे हैं, यानी इंडस, झेलम और चेनाब को दे हैव कॉल्ड इट एज वेस्टर्न रिवर गोइंग टू पाकिस्तान. और ये जो तीन ब्लू में मैंने बताया है, रावी, ब्यास, सतलज, दीज आर कॉल्ड एज ईस्टर्न रिवर्स which should have water rights to for India. ठीक है. अब तो इसे बता ये रहे हैं कि yes, although it is true that Jhelum and Chenab belongs to Pakistan, they are part of western rivers, but India is permitted to construct hydroelectric power facilities subject to some conditions including design specification as mentioned in the annexure. मतलब इंडिया इन दोनों पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, झेलम और चेनाब पर, लेकिन उसके कुछ रेगुलेशंस के साथ, जो कि मतलब उसके डिजाइन का स्पेसिफिकेशन है. नाउ वी कैन नॉट गो इन दैट डिटेल. तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसके एनेक्स्चर में जाइएगा, यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीटी इन डिटेल टॉक अबाउट व्हिच टाइप ऑफ डिजाइन इज अलाउड एज फार एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मेकिंग इज कंसर्न. ठीक है. तो अगर आप एनेक्स्चर खोलोगे, वो बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हैव एन आइडिया. यस, इंडिया कैन मेक, बट इट इज एक्चुअली द डिबेट इज ऑन कि डिजाइन की, किस डिजाइन का अलाउड है. कुछ होगा उसमें रूल्स की, इस डिजाइन का बना सकते हैं, इस डिजाइन का नहीं बना सकते, समथिंग लाइक दैट. नो, अगर कुछ डिस्प्यूट हो, सो देयर आर एक्चुअली स्कोप फॉर न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. देखो एक्चुअली क्या होता है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, सो देयर आर टू स्कोप. वन इज कॉल्ड एज अपॉइंट एन न्यूट्रल एक्सपर्ट, एंड द सेकंड इज सेट अप एन एड हॉक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. एड हॉक मतलब होता है टेम्परेरी पर्पस के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप.
एंड दिस इज द सेकंड स्टेप, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि both have been, since Pakistan has complained to World Bank, so both have been set up. So neutral expert भी बनाया गया और ad hoc court of arbitration भी set up किया गया. So what is the name of the neutral expert appointed by the World Bank for dispute? Michael Walzer, Michael Lino, Anshula Kant, Indermeet Gill. What is the right answer? कौन से न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है? दो चीज बनाई गई, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और दूसरा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एड हॉक, यानी टेम्परेरी बेसिस पे ना। देखो अब थोड़ा सा लॉजिक लगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा बिकॉज दीज टू आर इंडियंस। न्यूट्रल एक्सपर्ट का मतलब कोई तीसरे कंट्री का बंदा हो, है ना, या लेडी, जो भी है ना। सो वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, इट शुड बी फ्रॉम सम अदर कंट्री, इट शुड नॉट बी फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान बिकॉज ऑफ कोर्स दैट विल नॉट बी न्यूट्रल, है ना। So the right answer is actually B is the right answer. Michael Lino is the right answer. Yes, Rafi Nobani and Auguste Ayer, you both are right. So Michael Lino has been appointed as the neutral expert. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? After that, the court of arbitration was also set up. So please tell me, in court of arbitration, who is the chairman of that? Demis Hassabis, Michael Lino, Anshula Kant, Professor Sean Murphy. Again, you can reach to the answer very easily. Anshula Kant cannot be the answer because of course Indian origin के तो न्यूट्रल का न्यूट्रलिटी में मतलब क्वेश्चन हो जाएगा ना। Demis Hassabis got Nobel Prize last year, तो ये ऑप्शन गलत है। Michael Lino is actually neutral expert, so the right answer is option D. Professor Sean Murphy is the chairman of Court of Arbitration. D is the right answer. ये सब इन न्यूज़पेपर में आया था। All these got published in newspaper if you are reading newspaper properly. ठीक है, तो अगर आप देखोगे न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, है ना, Michael Lino, is a neutral expert, and Professor Sean Murphy is the chairman of Court of Arbitration. That is what you should be knowing, and the decision is binding, है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, please read about that, है ना। And Court of Arbitration में voting होता है, so there is a chairman and there are other members also. So अगर कोई टाई हो जाए वोट्स तो फिर चेयरमैन का वोट कास्टिंग वोट होता है। मान लीजिए 4:4 हो गया, तो अब जो चेयरमैन वोट देंगे फिर से दोबारा, that will be the final vote and all. So ठीक है, so this is what you should be knowing. है ना। वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट मींस माइकल लिनो की बात कर रहे हैं ना। सेज कंपिटेंट टू जज इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। देखो ये अभी की आर्टिकल है, 21 जनवरी 2025. So if you are reading newspaper, I'm sure you must have seen these articles. ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है ना, माइकल लिनो, है ना, इनका पूरा एनी मतलब वही उन्हीं को न्यूट्रल एक्सपर्ट को लिख रहे हैं, है ना। Last September, the Hindu reported that India decided there would be no meetings of Permanent Index Commission. And हमने बताया था ना कि Permanent Index Commission generally meets regularly. The officers from both the sides come and meet, है ना। तो the last meeting happened in Delhi, मई 2022 में लास्ट मीटिंग हुई थी Permanent Index Commission की। And since January 2023, India has written 4 times to Pakistan to initiate the talks. यानी कई 4 बार इंडिया ने लिखा है कि आप बात शुरू कीजिए और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो इसको आप पढ़ लीजिएगा। The dispute resolution mechanism laid down under the Indus Water Treaty as India interprets says that a dispute's first attempt to be resolved by PIC. है ना, हमने आपको बताया if there is any dispute, Permanent Indus Commission is there, जहाँ from the Indus commissioners from both the side come and talk and try to resolve the dispute. तो पहला तो ये, अगर वो नहीं होता है तब न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात होती है ना, मैंने बताया। The second step is neutral expert, which is appointed by World Bank. अगर वो भी फेल कर गया तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाता है। So these are the 3 steps, है ना। Permanent Index Commission is there, then neutral expert, and then court of arbitration. ठीक है, so that is what you should be knowing. अगर आपने देखा होगा, है ना, while both countries first seemed to agree to the World Bank appointing a neutral expert, Pakistan in 2017 asked for a court of arbitration. तो यानी Permanent Index Commission वाला मामला नहीं चला होगा, मींस तभी पाकिस्तान गया, बोला, उसने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए, तो दोनों कंट्री एग्री कर गए थे। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान said that we need court of arbitration, the third step. So the World Bank first ruled that having neutral expert and together could lead to a contradictory outcome sector. ठीक है, खैर उसमें डेटा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन 2022 में facilitated setting up both an expert as well as chairman of court of arbitration. तो फाइनली वर्ल्ड बैंक ने दोनों अपॉइंट कर दिया, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी। तो लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाले प्रोसीडिंग्स जो द हेग में, वहां भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सो देयर आर एक्चुअली फ्रिक्शंस ऑन दीज इश्यूज।
ठीक है, मतलब पहले इंडिया ऑलवेज मेंटेन कि आप पीआईसी में बात करो ना, यहीं पे सारा मामला सॉल्व कर लो. इफ पीआईसी फेल्स देन गो टू द न्यूट्रल एक्सपर्ट, एंड इफ न्यूट्रल एक्सपर्ट फेल्स देन गो टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमको दोनों चाहिए, दोनों बनवाइए, सेटअप कीजिए और समथिंग लाइक दैट. और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज एक्चुअली हेडक्वार्टर्ड इन द हेग इन नेदरलैंड. ओके, तो ये भी मामला चल ही रहा है. सो आई विल नॉट बी, लेट्स सी व्हाट विल द थिंग विल कम आउट. तो द हेग नेदरलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है. कैन यू प्लीज टेल मी देयर इज अ वेरी फेमस इंटरनेशनल बैंक हेडक्वार्टर्ड इन द हेग? कोई बता सकता है? दिस इज इंडिया, दिस इज यूरोप, है ना, और यहां पर आपको मिलेगा दिस इज नेदरलैंड, और इस नेदरलैंड में यू विल फाइंड द हेग. तो द हेग में और क्या चीज का हेडक्वार्टर है? वेरी फेमस इंटरनेशनल कोर्ट. दो है, एक तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज अ यूएन बॉडी, विच इज अ यूएन ऑर्गन, और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ये वाला बहुत फेमस है आईसीजे. एंड इन दिस क्लास, अगर आपने ये क्लास मेरी देखी होगी, इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज प्लीज गो एंड वॉच इट. इसको स्टार मार्क लगा लो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी एग्जाम्स. ये सर्च करना ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन करियर लॉन्चर, ऐसे सर्च करना, यू विल गेट दिस वीडियो. एंड प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव सब्सक्राइब टू अवर चैनल. चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आसानी से देखेगा. So here I have discussed all the 6 principal organ of United Nations, and one of the principal organ is International Court of Justice headquartered in The Hague, Netherlands. ठीक है, तो ये भी देखिएगा, because United Nations questions on United Nations are asked many times in exam. तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए. ठीक है, so this is all about today's class. I will be meeting you on Saturday at 8:30 p.m. with budget class. Saturday को 1 फरवरी है, and we are having budget being presented, so please do join live. That would be very very beneficial. I will try to explain the budget in a very simple and lucid way. Simple language में समझा दूंगा. So Saturday को 8:30 में we'll meet. So this is all about today's class. Thank you everyone. हाँ, किसी ने लिखा भी था ICJ and ICC. Yes, Agastya, very good. You have written it. Great. And Safi ने भी लिखा था. Great. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.